You keep on insulting them, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको. Keep on humiliating them, but still they are going to do that mischief. They cannot become a good student, they cannot become a good son, but a bad person they are going to act as. So now this sermon, it had been preserved and it's given here. Okay, ये पूरा sermon दिया हुआ है और ये बताता है कि Buddha's wisdom about one scrutable kind of suffering. Okay, ऐसी suffering that cannot be understood. Should we begin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, it's an incident of Kisa Gautami, and put the date. Put the date. Write down the date, beta. Yes, ma'am. Date written. Yes. Yes. Okay. Kisa Gautami had only one son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the body is dead." Now, see, it is an incident of Kisa Gautami. And this woman, she had a son, only one son. Okay. And the son died. But this woman, in her grief, she did not understand that her son had died. Okay, so what did she do? Everywhere she carried her dead son, asking the neighbors to give medicine so that her son might be cured, right? The people, they started talking about her that this woman, she has lost her senses and she's not able to understand that her son is already dead. समझ में आ गया? आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. दो जनों को ही आया है, बाकियों को क्या आया है? Yes, ma'am. आ गया. यस मैम. हेलो. हाँ बा प्रणाम करो. अरे बाद में क्या कर कर दो रहे? प्रणाम. अच्छा. हाँ. अविनाश फुलवारी. इनको यही ध्यान नहीं है हम क्या बोल रहे हैं स्क्रीन पर, किससे बातें कर रहे हैं. So now what happens, है ना, सब neighbors बात करने लगे कि this woman, she has lost her senses. Okay, ये बच्चा तो already dead हो चुका है and she doesn't even realize this. At length, Kisa Gautam met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child." Means I cannot give you medicine. The medicine means I cannot give you medicine for thy means for your child. But I know a physician who can. Now finally what happens, Kisa Gautam, she meets a man और वो आदमी कहता है कि I'm sorry, I cannot give medicine for your child, but I can tell you a physician that I know. The girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakya Muni the Buddha." Okay, Sakya tribe के थे इसलिए Sakya Muni बोला गया. Now see, कीसा गौतम को उस आदमी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम उनके पास जाओ, साख्या मुनि जो है गौतम बुद्ध, you just go to him. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." Now this woman, she went to Gautam Buddha and she started crying there. Okay, and she told Gautam Buddha to give medicine that could cure her son. वहां जाके प्रे करा, गिड़गिड़ाई, बैक करा गौतम बुद्ध के सामने कि मुझे वो मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. Now the Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." समझ में आया? अब गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिया? "Surely I can cure your son, लेकिन इसके लिए क्या लेकर आना? मस्टर्ड सीड्स लेकर आना. ओके, और कितनी? हैंडफुल ऑफ, राइट, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेकर आना
और उस घर से लाना, किस घर से लेकर आना, where Where there no one is. haven't, yes, there hasn't been any death. समझ में आया? जहां पर कोई डेथ नहीं हुई हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो कहते हैं ठीक है भाई, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेकर आना, लेकिन उस घर से लाना जहां पर किसी का बेटा नहीं मरा हो, किसी का हस्बैंड नहीं मरा हो, कोई पेरेंट या कोई भी, ओके, जहां पर कोई डेथ नहीं हुई हो ना, फ्रॉम देयर यू ब्रिंग इट। Poor Kisa Gotmi now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." Okay. Now Kisa Gotmi, she started going from house to house. She begged for this handful of mustard seed. People, they had been very kind to her. They had given her, but when she asked, okay, she got it from the people, handful of mustard seed. But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family? Did anybody die in your family? अब मस्टर्ड सीड तो लोगों ने दे दी, लेकिन जब कीसा गौतमी को ध्यान आया, गौतम बुद्ध ने कहा था भाई उस घर से लेनी है where nobody had died. Okay, so she asked them ki if anybody had died in your family. They answered, alas, the living are few but the dead are many. Okay, अब उसको क्या जवाब देते? Alas means they were so sorry. कहते हैं living are few, living are few, you got it? Yes, ma'am. Yeah, very few persons are alive, but what happened? Deaths are many. There are many. Many are dead. Got it? So many ancestors and everybody, right? Why Harsh is showing the thumb, and to whom? Harsh, किसको दिखाया जा रहा है ये thumb? Yes, Harsh. No, ma'am. तुम नहीं, वो दूसरा था ना, वो कोई जिसकी पिक आई थी। अब तो भाग गया ना, he will not join the meeting. Okay, so now says कि yes, है ना, जिंदा लोग तो कम है लेकिन डेड बहुत है हमारे यहाँ। Do not remind us of a deepest grief, और क्या बोलते हैं, मत याद दिलाओ of a deepest grief, of a great sorrows. Why? We have lost many of our family members, many ancestors and all, and there was no house but some beloved one had died in it. Okay, और कोई ऐसा घर नहीं था जहां पर किसी की डेथ नहीं हो, right? Kisa Gotmi became weary and hopeless. Now she became very tired. She lost all her hope and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Now Kisa Gotmi, she was sitting and she became very tired. Okay, she went from house to house. She begged for the mustard seeds. She questioned them about the deaths that might have occurred. Yes, there wasn't any house where nobody had died. Now she became very tired and she lost all her hopes. So she sat down at the wayside. Okay, एक side में बैठ गई, watching the lights of the street, है ना, and the lights, they were flickering up and down. Flickering, समझ गए? Flicker हो रही थी and extinguish मतलब बंद भी हो रही थी. At last, the darkness of the night reigned everywhere. And finally, what happens? The night, it spread everywhere. The darkness spread everywhere. And she considered the fate of man, that the lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, okay, now see, वो lights देख के she started thinking of the fate of man. Fate क्या? इंसान की किस्मत भी ऐसी होती है, about the people, about the human beings की उनकी लाइफ भी इसी तरह से फ्लिकर होती है, राइट? और फिर एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, है ना, बंद हो जाती हैं. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माय ग्रीफ. समझ में आया? लाइट जलती है मीन्स अ पर्सन, ही और शी कम्स इनटू अ लाइफ एंड एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, पुट ऑफ हो जाती हैं.
it means the person is gone. Okay, so similarly she understood that similar is the condition of human being also. Okay, as the lights they come out, similarly the human beings they come into this world and extinguish ho jati hain, so means the person has gone, he is dead. And she started thinking, how selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all his selfishness. Underline it. Underline karo jaldi. Hurry up. Underlined. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So उसको ये बात समझ में आ गई कि हम कितने सेल्फिश हैं, मतलब मैं कितनी सेल्फिश हूँ. डेथ तो सब ये कॉमन है. ओके, इट कम्स टू एवरीबॉडी, राइट. और दिस वैली ऑफ डेसोलेशन किसको बोला गया? द मीनिंग हैज बीन गिवन बेटा. द मीनिंग इज गिवन देयर. डिड यू गेट द मीनिंग? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. मिल गया ना मीनिंग? Yes, ma'am. सो उसको समझ में आ गया ये साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ जो है ना, ये तो क्या है? इट इज अ नेचर्स वे ऑफ वर्किंग. ओके, इट इज अ गॉड्स वे ऑफ वर्किंग. एंड उसको एकदम से कॉन्शियस हो जाती है कि कितनी सेल्फिश है वो. शी कुड हैव अंडरस्टूड इट कि वन हु इज बॉर्न इज श्योर टू डाई. ओके, और यस, और इस वैली ऑफ डेसोलेशन में एक ऐसा पाथ है, पाथ मीन्स एक ऐसा रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस. नाउ सी व्हाट शी वांट्स टू से. मैन आर मॉर्टल. मॉर्टल, यू गॉट इट? अमर नहीं होते, दे आर नॉट इमॉर्टल. ओके, दे डाई, इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. उसको ये Yes, समझ ma'am. में आया कि इंसान जो है अमर नहीं है. One who is born is sure to die one day, later or sooner. समझ गए आप? कभी ना कभी तो Yes, ma'am. मौत आती है, ठीक है. और इमॉर्टलिटी किसको मिलती है? इमॉर्टल्स कौन होते हैं? वन हु हैड टेकन अ पाथ फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स. इमॉर्टल कौन हो जाते हैं? जो बिल्कुल दूर रहते हैं वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्डली लग्जरी से, दुनिया के ऐशो आराम से, सारा अपना सेल्फिशनेस सरेंडर कर देते हैं. गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, श्योर? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. Got it? Now when she was tired, she sat by the roadside and she saw the city lights blinking. Okay, and just she kept on seeing those blinking lights until the darkness was there. So the darkness, it spread everywhere. तो बहुत सोचने के बाद कीसा गौतमी शी रियलाइज कि जो इंसान का फेट है, उसकी किस्मत है, वो भी सिटी लाइट्स की तरह है, जो फ्लिकर होती हैं एंड देन दे एक्सटिंग्विश. ओके, देन दे एंड अप, राइट. तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यू नो, it is a nature's way of working. Got it? समझ में आया? yes, एंड ma'am. Yes, ma'am. इतनी कॉन्शियस हो जाती है वो कि वो रियलाइज करती है कि शी हैड बीन सो सेल्फिश. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि डेथ, यू नो, इट इज अ necessary and it is sure to come to each or every human being. Okay, death will come to her also, sooner or later, है ना. कभी ना कभी तो मौत आएगी. तो वो समझती है, और वो ये भी समझती है कि जो मैन है वो मॉर्टल है, ठीक है, अमर नहीं है. लेकिन अमर वही इंसान होता है ना, हु फॉलो द पाथ ऑफ अनसेल्फिशनेस. ओके,
अनसेल्फिशनेस समझ गए, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होता. दे फॉलो द पाथ फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स और लग्जरीज. क्लियर? क्लियर Ma'am. not? Yes, Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now see, what does Gautam Buddha say? Ma'am. What happened? Ma'am, can you please re-explain this line, yet in this valley of desolation? Valley of desolation means, valley of desolation is what? This world, okay, that is filled with deep sorrow, isn't it? तो ऐसी दुनिया में एक रास्ता वो भी है जो इंसान को इमॉर्टल बनाता है, राइट? यानी अमर बना देता है. हाउ? By leaving the path of selfishness. Clear? And a path that is free from all the worldly pleasures. See the great saints. सेंट समझती हो ना, साधु संत, बहुत बड़े बड़े महात्मा वगैरह, ठीक है? वो दुनिया की लग्जरीज में कहीं भी इंडल्ज नहीं होते हैं. समझ में आया? They Yes, are ma'am. lost in their own meditations, in their own prayers, in their own world. Got it or not? Yes, ma'am. है ना? तो ऐसा इंसान ही कौन बनता है? अमर बनता है. वो उसको ये समझ में आता है. ठीक है? Yes, ma'am. चलो अब तो टाइम ही हो गया, 8:30 हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव डन दिस आल्सो. Anyways, we'll just finish it up. Day after tomorrow, I'll just finish it up. Right? Yes, ma'am. Revise Yes, it. ma'am. In case if you do not understand, then let me know. I'll explain it again. Okay, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. Have a good day. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bless you. Ma'am.